Good morning, everyone. My name is Deep. I'm an intern at Intellify, and today the topic that we are going to discuss is breathing underwater. So the first slide is life underwater. So as you can see in these pictures, the life underwater is quite different than the life that we know that is on earth or on land. तो यहाँ पे सब कुछ अंडर वाटर है, पानी के नीचे है. तो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म यू सी, ये ऑक्टोपस हो गया, ये टॉर्टोइज या टर्टल हो गया, ये सी हॉर्स हो गए, दीज आर सम फिशेस, दिस अ स्टार फिश, दिस अ क्रैब. सो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे लिव इन वाटर एंड ओवर द ईयर्स, काफ़ी सालों के थ्रू आउट द ईयर्स, दे हैव अडेप्टेड टूवर्ड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ लिविंग. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, पानी के नीचे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग नहीं कर सकते एज ह्यूमंस. वी हैव स्पोकन अबाउट दिस बिफोर बिकॉज द ऑक्सीजन प्रेजेंट अंडर वाटर इज डिजॉल्व्ड इन नेचर. वी कैन नॉट यूज दैट ऑक्सीजन एज इट इज. हाउएवर जो एनिमल्स जो अंदर रह रहे हैं पानी के, दे हैव ओवर द ईयर्स adapted to this particular habitat. अब habitat क्या होता है? Habitat is basically the environment in which you live. तो जैसे ये अंडर वाटर है, तो इन लोगों का हैबिटेट अंडर वाटर हो गया, ये अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए. सो दे हैव अडेप्टेड ओवर द इयर्स टू ब्रीद इन वाटर, लिव इन वाटर एंड रिप्रोड्यूस एंड ऑल्सो transport. In लोगों का ये इतना efficiently, they have fins and also they can transport easily in water, they can travel easily in water. So basically animals exist in various different habitats. Underwater is no different. The life underwater is extremely diverse. और ऐसा आप नहीं देखेंगे कि सिर्फ fishes रहते हैं, नहीं. There are seahorses, there are tortoises, there's turtle, tortoise, snails, and then there is starfish, crabs, octopus. All of them are quite different from each other. बहुत diverse है. It is not that सिर्फ fishes या सिर्फ crabs रहते हैं. There is a diversity. We see different types of organisms living underwater as well. Moving on, have you thought of these particular questions as to how do fishes breathe underwater? अब we have spoken कि fish जो है वो dissolved oxygen लेता है, but हमने कभी बोला नहीं कि how do they breathe, exactly mechanism क्या है. जैसे कि हमने हमारे mechanism में पढ़ा कि we have a respiratory system in which there's a nostril, nostril से trachea में जाता है, trachea से lungs में जाता है. So similarly, obviously, fishes में भी ऐसा कुछ unique system होगा. So what is that? Have you ever thought of it? अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आप इस डायग्राम में भी देखिए, ये पर्टिकुलर रीजन जो है, these are called gills. So we know this is called gills, but what are gills? What exactly is it? Is it an opening? Is it another organ? Is it their lungs? So we look into those things. And lastly, if you see whales, आपने काफी बार वीडियोस में देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में कि the whales when they come to the surface, they squirt out water. पूरा ऐसे इतना बहुत ज़्यादा एक फाउंटेन जैसा पानी छोड़ते हैं, एंड इट इज़ लाइक स्टीम, बिल्कुल स्टीम जैसा निकलता है बाहर. सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, एंड व्हाई डोंट अदर फिशेस डू दैट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वील बी कवरिंग टुडे. So moving on, breathing underwater. So as we spoke about gills, gills function as gateways that let water rich in dissolved oxygen enter the body of the fishes, and then respiration occurs and excess water is expelled out. So basically gill kya hai? It is not exactly an organ, but it is an opening. It is more of a gateway which is letting all the water out. तो गिल से एग्जैक्टली वो सांस ले नहीं रहे हैं, बट इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. इट इज फैसिलिटेटिंग रेस्पिरेशन. हाउ इज इट डूइंग दैट? तो ये जो पानी है, इट एंटर्स थ्रू द माउथ, इट गोज इनसाइड द बॉडी. बॉडी में जो सेल्स हैं उसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है. एज सुन एज ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना. अब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, वो भी डिजॉल्व है पानी में. तो गिल्स के थ्रू देन वी आर एक्सपेलिंग दैट आउट. अब basically we can say कि water rich in oxygen going in from mouth and water rich in carbon dioxide being expelled from the gills. That is how respiration is being or breathing is occurring underwater in fishes. Moving on, whales. जैसे कि हमने whales की बात की, तो हमने काफी बार देखा कि whales come to the surface and then they squirt out so much water. They give out so much of water outside. पूरा steam की तरह बाहर निकलता है. So if we had to compare this, and this is quite similar to something that we humans do, हम humans भी ये करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था. So this is called sneezing. So क्या है कि पानी में काफ़ी कबार काफ़ी बैक्टीरिया भी घुस रहा है उनके बॉडी में, बिकॉज दे आर जस्ट ओपनिंग देयर माउथ एंड देन पूरा का पूरा पानी में जितना बैक्टीरिया है और हार्मफुल चीज़ें हैं वो भी अंदर घुस रही हैं. एंड वंस इट एंटर्स द बॉडी का जो खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है वेल्स में, दैट इज कॉल्ड ये स्नीजिंग वाला पार्ट. So basically that is when they go to the surface and उनके ऊपर एक blow hole होता है जिसके थ्रू they
expel or forcibly gush out all the bacteria along with some hot water. अब क्योंकि पानी के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है और ऊपर बहुत ज़्यादा है, so when they are expelling so much hot water outside, due to temperature difference, it seems like, दिखने में ऐसा लगता है कि steam निकल रहा है, but actually it's not steam, it's hot water that they are expelling out, which is rich in bacteria, and it is more of a whale sneezing than anything else. So it's a defense mechanism जो whales में inbuilt है, and that is how they function. So guys, to recap, I will once again say कि जो animals हैं वो बहुत टाइप्स के हैं, डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट उन लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या कोई भी बॉडीली फंक्शन है वो डिफर करता है. अंडर वाटर देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. सिर्फ फिशेस नहीं मिलती अंडर वाटर, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी फाउंड अंडर वाटर एज वेल. Apart from that, fishes respire through gills, and gills is more of a gateway. It is an opening through which carbon dioxide rich water or unwanted excess water is being expelled out. Pani rich in oxygen enters through the mouth, goes to the cells of the fish's body, respiration occurs, and then excess water is expelled out of the gills. Moreover, जो पानी स्प्रे आउट होता है ब्लो होल से of the whales, that is because of a sneezing mechanism, self defense mechanism that whales have inbuilt in them, which basically expels hot water and bacteria out of their body to help them live and not get sick. So that is all guys. I hope this presentation has helped you out, and if you have any more doubts, you're free to visit www.intellify.in, wherein we have a lot of forums and question answer sessions wherein you can talk to our instructors who will help you solve any other doubt that you have regarding the topic. So yeah, thank you.